Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. You are watching YouTube channel Real Life Study. This is the book of grade 7, Oxford grade 7 third edition for secondary classes science factoid. Today we are going to solve full test yourself of this chapter number 9, which name waves and energy. Open your book, page number 123. In this chapter about 5 test yourselves, and I have solved all 5 test yourselves and make notes for you. Test yourselves. Question number 1 है, what is the main difference between a mechanical wave and an electromagnetic wave? और इसी का सेकंड 2 पार्ट है इसके. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. आंसर देखें. फर्स्ट ऑफ ऑल है मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल वेव में लिखें इट रिक्वायर्ड अ मीडियम टू ट्रेवल. मैकेनिकल वेव कैन नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय मैकेनिकल डिस्टर्बेंस इन द मीडियम. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में लिखें डज नॉट रिक्वायर्ड मीडियम टू ट्रेवल. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन ट्रेवल इन वैक्यूम. इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय oscillation चार्ज्ड. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच. मैकेनिकल वेव के एग्जांपल में लिखें साउंड वेव्स, वाटर वेव्स, सेस्मिक वेव्स एक्सेट्रा. और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में लिखें रेडियो वेव्स, एक्सरेज, गैमा रेज, माइक्रोवेव्स एक्सेट्रा. व्हाट इज एन ऑसिलेशन? ऑसिलेशन में लिखें रेगुलर अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स और बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स मूवमेंट. क्वेश्चन है डिस्क्राइब द ऑसिलेशंस इन अ ट्रांसवर्स वेव. In a transverse wave, particles move up and down as the wave travels sideways. Longitudinal waves में लिखें in a longitudinal wave, particles oscillate parallel to the wave's direction, creating compression and rarefactions. What is wave frequency? Wave frequency is the number of oscillations in a wave per unit of time measured in hertz. How it is measured? Wave frequency is measured in hertz, counting the number of oscillations. Test yourself, पेज नंबर 125 पर सेकंड टेस्ट योरसेल्फ है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है How do humans and other animals detect sound energy? Sound waves enter the ear, making the eardrums vibrate. The vibrations are transmitted to the inner ear, where hair cells convert them into electrical signals sent to the brain via the auditory nerve. How are sounds made? Sounds are made by the vibration of objects, creating pressure waves that travel through the air and are detected by the ears. Third question है name one example of source of sound that has vibrating string. One example of a source of sound with vibrating strings in a guitar that directly vibrates the air. इसका आंसर लिखें. Piano is an example of a source of sound with vibrating strings that directly vibrates the air. Explain how a dog produces a bark. A dog produces a bark by exhaling air through its vibrating vocal cords. पेज नंबर 125 पर 2 टेस्ट योरसेल्फ है, ये मैंने सॉल्व कर लिया है. थर्ड टेस्ट योरसेल्फ है डिस्क्राइब हाउ साउंड इज हेयर्ड व्हेन अ ड्रम इज हिट. ड्रम्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन हिट, creating vibrations that travel through the air, reach the ear and are perceived by the brain, enabling us to hear the sound. What evidence in there that sound travels through gases? Audible transmission through air demonstrates sound traveling in gases. Liquids. Hearing sound underwater indicates sound transmission through liquids involving molecule vibrations. Solids. Audible sound passing through walls and floor provides of sound traveling through solids via compressional waves and particle vibrations. Explain why sound cannot travel in a vacuum. Sound needs particles to travel, but vacuums lack these particles. Therefore, sound cannot travel in a vacuum. फोर्थ टेस्ट योरसेल्फ, जो कि पेज नंबर 128 पर मौजूद है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है What is approximate speed of sound? In air, the speed of sound is about 340 meters per second.
although this can vary depending on the temperature. Does sound travel at the same speed through all materials? No, the speed of sound varies in different materials. It's faster in solids, slower in liquids, and even slower in gases. Question number 3 है in a thunderstorm, the thunder is made at the same time as the lightning. Explain why a person 1600 meters away here thundered about 5 seconds after seeing the lightning. The delay between seeing lightning and hearing thunder is because light travels faster than sound. If you hear thunder about 5 seconds after seeing lightning, the lightning is roughly 1600 meters away, as sound takes time to travel that distance. What is an echo? An echo is a repeated sound caused by the reflection of sound waves off surfaces reaching the listener's ears after a brief delay. What is echo time? Echo time is the duration between emitting a sound and receiving its reflected echo, measuring the time taken for the sound wave to travel to a surface and back. Calculate the speed of sound in the example of echoes. Use the formula speed distance over time. Total distance traveled by echo is equal to 80 meter plus 80 meter. यानी एक दफ़ा साउंड जाएगा, दोबारा जब वापस आएगा तो उन दोनों के को प्लस करने से आंसर आएगा 160 मीटर. अब टेक टाइम में लिखें इज इक्वल टू 160 ओवर 0.5. यहाँ कटिंग करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 320 मीटर पर सेकेंड. पेज नंबर 130 पर यूनिट नंबर 9 का लास्ट टेस्ट योरसेल्फ है. इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें क्योंकि ये वीडियो बहुत मेहनत से आपकी सहूलियत के लिए बनती है. बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके. लास्ट टेस्ट योरसेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ मीन बाय पिच. आंसर लिखें. पिच रेफर्स टू द परसीव्ड हाईनेस और लोनेस ऑफ अ साउंड विच इज़ डिटरमिन्ड बाय इट्स फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड में लिखें द फ्रीक्वेंसी ऑफ sound is the number of vibrations per second measured in hertz. Determining the pitch, higher frequencies result in higher pitches and lower frequencies in lower pitches. Second question है the frequency of a drum note is 20 hertz. What does this tell you about the drum skin movement? A drum note with a frequency of 20 hertz indicates that the drum skin moves back and forth 20 times per second. The higher the frequency, the higher the pitch of the drum sound produced. Third question है a drum is hit hard and then softly. A. How does the volume change? Hitting a drum hard will produce a louder sound due to the increased force causing larger vibration in the drum head. Conversely, hitting it softly will result in a quieter sound as the vibrations are smaller with less force applied. अगर आप बहुत शॉर्ट आंसर लिखना चाहते हो तो आप ये लिख सकते हैं Hitting drum hard produces a louder sound while hitting it softly results in a quieter sound. B question है how does the amplitude change? When a drum is hit hard, the amplitude of the resulting sound wave increase. In contrast, hitting the drum softly reduces the amplitude. Amplitude refers to the magnitude or height of the sound wave and it directly influences the volume or loudness of the sound produced. अगर आप शॉर्ट आंसर लिखना चाहते हो तो ये आंसर लिख लें hitting a drum hard increases the amplitude of the sound wave making it louder while hitting it softly reduces the amplitude resulting in a quieter sound. Last question है what is the wavelength of a sound with a frequency of 330? Take a speed of sound in air to be 330 meter per second. Velocity is equal to wavelength multiplied by frequency. Velocity over frequency is equal to wavelength. यहाँ लिखें velocity में लिखें 330 और frequency में लिखें 330. इनकी कटिंग करने के बाद आंसर आएगा 1 मीटर. तो wavelength क्या है 1 मीटर. ये इसका आंसर है.
आज हमने चैप्टर नंबर 9 के तमाम टेस्ट रिजल्ट सॉल्व कर ली हैं। इसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको इसकी फुल एक्सरसाइज क्वेश्चन के साथ मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।